નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારું દરેકનું સ્વાગત છે. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દીમાં આપણે ગયા પીરિયડમાં આપણે ચેપ્ટર 5 એટલે કે જય વિજ્ઞાન કી એ કાવ્ય છે, બરાબર. એ કવિતા આપણે સમજ્યા હતા. તો એનું આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાનું બાકી છે. તો આજે આપણે ચેપ્ટર 5 સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખીશું, બરાબર. તો દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથી સાથે લઈને બેઠશે. પેજ નંબર 28 સાથે સાથે દરેક વિદ્યાર્થીએ લખવાનું છે, બરાબર. તો સ્વાધ્યાય પોથી સાથે લઈ લો, પેન લઈ લો. ચલો, તો પહેલાં આપણે ઉપર જોઈએ તો સ્વાધ્યાય પોથીમાં જુઓ, અહીંયા કવિતા કા સરળ અર્થ એ આપ્યું છે, બરાબર. એટલે કવિતાનો ભાવાર્થ જે સરળ રીતે અહીંયા આપેલો છે. તો આપણે પહેલાં એનું વાંચન કરીએ, પછી આપણે સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ કરીશું, બરાબર. ચલો, હું વાંચું છું તો દરેક વિદ્યાર્થીનું સ્વાધ્યાય પોથીમાં ધ્યાન. जवान की जय हो, किसान और विज्ञान की जय हो. वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का सिलसिला शुरू हुआ. इनसे लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई. इनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई. जादू की तरह विकास हुआ. नए नए साधन बनाए गए. आज इन नए अनुसंधानों का जय जयकार हो रहा है. मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर और फैक्स का उपयोग कीजिए. आज लोग पल भर में मथुरा, जयपुर पहुंच जाते हैं. जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले, विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है. कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है. इंटरनेट सबको सुख दे रहा है. इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो. इस नई सदी के बच्चे काउंसमा छे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा दूने गर्व से बातें कर रहे हैं. એટલે કે गर्व साथे आ जमानाना नवी सदीना बाळको छे ए वातो करी रह्या छे. हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे. हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे. हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है. तो हवे आपणे स्वाध्याय पोथीमां जोईए. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए. એટલે કે સાચો વિકલ્પ શોધીને આપણે લખવાનો છે. પહેલું છે જય જવાન જય કિસાન, यह एक खाली जग्या है. તો એમાં આવશે ઓપ્શન ડી, નારા, બરોબર. બીજું, सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? तो एमां आवशे ऑप्शन ए, क्रम. सिलसिला एटले क्रम. त्रीजू, विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? तो एमां आवशे ऑप्शन बी, विकास. विज्ञान ने विकास का जादू दिखाया है. चौथुं, मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए. तो एमां आवशे ऑप्शन डी, मानव. तो दानव, बराबर. हवे प्रश्न 2. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए. तो पहलू जो अहींया काउंसमां आपणे जवाब आपेला छे, बराबर. तो एमांथी साचो जवाब शोधीने आपणे लखवानो छे. पहलू खाली जग्या का शुरू सिलसिला, तो एमां आवशे सुविधाओं का शुरू सिलसिला. बीजू, नए नए खाली जग्या बनाए, तो एमां आवशे उपकरण. त्रीजू, खाली जग्या पर बातें कीजिए, तो
तो एमां आवशे मोबाइल, मोबाइल पर बातें कीजिए। चौथुं, कम्प्यूटर की खाली जग्या आ गई, तो एमां आवशे क्रांति। पांचमું, बच्चे नई खाली जग्या के बोले, तो सदी, तो नई सदी एटले के युग, नई सदी के बच्चे बोले। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो साचुं वाक्य शोधीने आपणे वाक्य पूर्ण करवानुं छे। पहेलुं, जय जवान जय किसान का नारा खाली जग्या ने नारा, तो एमां आवशे ऑप्शन क, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री छे एमणे आ नारो आप्यो छे, जय जवान जय किसान। पछी हवे आपणे जोईए नंबर 2, नए नए अनुसंधानों के कारण ही, तो एमां आवशे ऑप्शन क, नए नए उपकरण दिए जाते हैं। पछी त्रीजું, विज्ञान के कारण हमें, ऑप्शन बी, तरह तरह की सुविधाएं मिली है। विज्ञानना कारणे आपणे नवी नवी सुविधाओ छे ए मळी छे। हवे प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो एक एक वाक्य में आपणे जवाब आपवाना छे। कवि किसकी जय जयकार करते हैं? तो जवाब, कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। प्रश्न 2, विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है? जवाब, विज्ञान ने मानव को विजयी दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। डगर एटले के रस्तो, बरोबर, रास्ता। हवे सवाल 3, वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है? जवाब, वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम की बचत होती है। श्रम एटले के शक्तिनी शक्ति। प्रश्न 4, यश पाने का मार्ग कौन सा है? तो एमां लखो, समय के साथ चलना, यही यश पाने का मार्ग है। प्रश्न 5, हमें किसकी शुरुआत करनी है? तो एमां आवशे, हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। छठुं, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो जवाब, वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करने से समय और शक्ति की बचत होती है। नंबर 7, किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है? तो उपकरण एटले के साधनों, एवा कया कया साधनों छे जेनाथी संदेश व्यवहार थई शके? तो जवाब में आवशे टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। प्रश्न 8, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? जवाब, हम विज्ञान के नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। प्रश्न 9, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? तो जवाब, हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। प्रश्न 10, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? तो एमां जवाब, हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वे हमारा मनोरंजन करता है। बराबर, टीवी तो बधाने गमे ने घरे जोवुं।
ટીવીમાં કાર્ટૂન આવે, પિક્ચર આવે, સિરિયલ આવે, તો એ એક પ્રકારનું મનોરંજન, એટલે કે આપણને એમાં મજા આવે જોવાનું. તો આપણને બધાને ટીવી જોવું ગમે છે. તો એ વિજ્ઞાનનો જે આવિષ્કાર છે એ આપણને બધાને ગમે છે. હવે મોટા પ્રશ્નો છે, બરોબર. પ્રશ્ન 5, નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કા ઉત્તર लिखिए. તો એમાં પહેલું છે, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? जवाब, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है. बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है. घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं. घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है. लेखन कार्य, मुद्रण कार्य એટલે કે લેખન કાર્ય. પછી सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है. એટલે કે દરેક ક્ષેત્રમાં કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ છે એ એક વરદાન સ્વરૂપે સિદ્ધ થયો છે. इंटरनेट जानकारी का भंडार है. इसमें किसी भी क्षेत्र से जानकारी मिल सकती है. बरोबर. હવે પ્રશ્ન 6, क्या होता बताइए. તો અહીંયા આપણને 3 વાક્યો આપેલા છે. જો એમ ન હોય તો શું થાય, બરોબર, એ આપણે અહીં કહેવાનું છે. પહેલું, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता. જો મોબાઈલની શોધ ન થઈ હોત તો શું થાત. તો એમાં લખો જવાબ, संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन अथवा पीसीओ के फ़ोन पर आधार रखना पड़ता और हम जहाँ और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती. बरोबर. तो मोबाइल न होय तो आपणे शुं थाय, तो के जे कॉम्प्यूटर टेलिफोन होय त्यां सुधी आपणे जवुं पड़े. लैंडिंग फोन एटले के जे स्थळे होय ई स्थळे આપણે જવું પડે. પીસીઓ એટલે કે જ્યાં બહાર આપણે જઈએ ત્યાં મોબાઈલનું બૂથ હોય તે, બરોબર, ટેલિફોનનું. અને આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણે વાત કરી શકતા નથી. એ સુવિધા આપણને ન મળે. ટેલિફોન હોય તો આપણે ટેલિફોન પાસે જવું પડે અને ત્યાં જઈને વાત કરવી પડે, બરોબર. ને મોબાઈલ હોય તો આપણે ગમે ત્યાં ઊભા ગમે તે સ્થળે આપણે વાતચીત કરી શકીએ. प्रश्न 2, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती. जो समय और शक्ति नो बराबर उपयोग न करिए तो आज आपणा देशे जे प्रगति करी छे ई आपणे प्रगति मेळवी शकीए नहीं. त्रीजું, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती. એટલે કે આપણે જે આ પ્રગતિ અત્યારે કરી રહ્યા છીએ, વિકાસ આપણો થઈ રહ્યો છે, બરોબર, જે ગતિથી, તો એ એટલું સંભવ બની શકે નહીં. કારણ કે કોમ્પ્યુટરથી આપણું ઘણું કામ છે એ આસાન થઈ જાય છે, સરળ થઈ જાય છે, બરોબર. ઇન્ટરનેટ છે તો આપણને ઇન્ટરનેટથી આપણને ઘરે બેઠા બધી માહિતી મળી જાય છે. એમાં આપણે ગૂગલમાં સર્ચ મારીએ તો આપણને દરેક પ્રકારની માહિતી ઘરે બેઠા આપણને મળી જાય. અને ઘણા કામ આપણે ઘરે બેઠા બેઠા કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટથી કરી શકીએ છીએ. અને આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે કે આપણે મોબાઈલથી ઇન્ટરનેટ દ્વારા જ આપણે બધું ભણી રહ્યા છીએ, બરોબર. તો આ પણ એક માધ્યમ, આ આપણું એક પ્રગતિનું આ એક ઉપકરણ છે. પછી છે પ્રશ્ન 7, ચિત્ર દેખકર વાક્ય લીખીએ. તો અહીંયા આપણને 9 ચિત્ર આપ્યા છે, બરોબર.
તો 9 નહીં 12 ચિત્રો આપેલા છે. તો એ 12 ચિત્રો જોઈને આપણે વાક્ય બનાવવાના છે, એટલે કે લખવાના છે. બરાબર, ચિત્ર જોઈને જે કાર્ય કરે છે એ આપણે વાક્ય લખવાનું છે. તો અહીંયા પેલું ચિત્ર છે, તો એમાં શું છે, તો એમાં લખો વાક્ય એક કરીને, લડકા પઢ રહા હૈ. તો પહેલામાં જો છોકરો વાંચી રહ્યો છે, તો એમાં એક કરીને લખો લડકા પઢ રહા હૈ. પછી બીજું વાક્ય મોર નાચ રહા હૈ. ત્રીજું વાક્ય એમાં શું છે, છોકરી દોડી રહી છે, તો લખો લડકી દોડ રહી હૈ. પછી ચોથું લડકા પાણી પી રહા હૈ. પછી પાંચમું વાક્ય લડકા સ્નાન કર રહા હૈ, એટલે કે નાહી રહ્યો છે. છઠ્ઠું लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है. पछी सातमू लड़का क्रिकेट खेल रहा है. पछी आठमू धोबी कपड़े धो रहा है. पछी नवमू वाक्य छे लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठा कर ले जा रहा है. बरोबर, हवे पछीनु पेज जोईए. एमां छे 10मुं वाक्य बालक सो रहा है. बरोबर, 11मुं वाक्य छे फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है. पछी 12मुं वाक्य छे लड़का पौधे को पानी दे रहा है. हवे प्रश्न 8 निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. એટલે કે અહીંયા આપણને શબ્દો આપેલા છે તેનો આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનું છે, વાક્ય બનાવવાનું છે. પહેલું ઉપકરણ, તો बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं. बीजू मोबाइल, मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है. तीजू कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ. चौथू क्रांति, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आई. पांचवू खुशहाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई. हवे प्रश्न 9 निम्नलिखित साधनों के अंग्रेजी नामों के लिए हिंदी नाम लिखिए. बरोबर, आ बधा अंग्रेजी नाम छे. बरोबर, मोबाइल, कम्प्यूटर, टीवी, तो आपणे एना हिंदी में नाम लखवाना छे. तो अहींया टीवी, टीवी ने हिंदी में शुं कहेवाय? दूरदर्शन. टीवी ए टूंकું रूप है. बरोबर, टीवी નું પૂરું નામ શું છે? ટેલિવિઝન. એ અંગ્રેજી નામ છે, એનું ગુજરાતી થશે દૂરદર્શન. બીજું છે રેડિયો, તો એનું હિન્દી નામ થશે આકાશવાણી. ત્રીજું ટેપ રિકાર્ડર, તો ધ્વનિ મુદ્રણ યંત્ર. ચોથું ટેલિફોન, એનું છે દૂરભાષ. बरोबर, पांचमू मोबाइल, तो भ्रमणभाष. छठू केल्क्युलेटर, तो गणन यंत्र. हिंदी में एने गणन यंत्र कहवाय, अंग्रेजी में एने केल्क्युलेटर छे. सातमू कम्प्यूटर, तो एने कहेवाय संगणक. फैक्स, तो चित्र संदेश. इंटरनेट, तो आंतरजाल. तो आपणे रोजबरोजनी भाषामां अंग्रेजी नामोनो ज शब्दोनो ज आपणे उपयोग करीए छीए. आपणे आ हिंदी शब्दो वापरता नथी. भ्रमणभाष, संगणक ने आंतरजाल ने एवा शब्दो आपणे नथी. अंग्रेजी भाषानुं प्रभुत्व हवे वधतुं जाय छे. बरोबर, आपणी भाषामां हवे अंग्रेजी शब्दो छे ए आपणे वधारे उपयोग करीए छीए. आपणे एनुं गुजराती अने हिंदी खबर होती નથી. तो આપણને એનું
ભલે આપણે એનો ઉપયોગ કરતા નથી, પણ આપણને એનું હિન્દી શબ્દ અને એનો ગુજરાતી શબ્દ એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, કારણ કે એ આપણી માતૃભાષા અને રાષ્ટ્રભાષા છે. તો આપણે આપણી રાષ્ટ્રભાષા અને માતૃભાષા આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આનો હિન્દીનો અર્થ કે ગુજરાતીનો અર્થ શું થાય છે. બરાબર? ચલો, તો આ પીરિયડ આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. આજનું હોમવર્ક આ સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ કરવાની છે. અને બીજી યુનિટ ટેસ્ટ પેપર તમને હવે મળી ગયા છે બધાને. બરાબર? તો એમાં બીજી યુનિટ ટેસ્ટમાં આ ચેપ્ટર પૂછાવાનું છે, 5મું, 3જું, 4થું અને 5મું. આ ત્રણેય ચેપ્ટર બીજી યુનિટ ટેસ્ટમાં પૂછાવાનું છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીએ એની તૈયારી કરવાની રહેશે. બરાબર? પેપર સારા અક્ષરે લખજો અને આ 5મું ચેપ્ટર છે એ સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂર્ણ કરજો. તમને સ્કૂલે જોવા માટે અમે મંગાવશું સ્વાધ્યાય પોથી. તો દરેક વિદ્યાર્થીએ સ્વાધ્યાય પોથી સાથે સાથે પૂરી કરવી. તો આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ.